Good evening, students. We'll wait for 2 minutes and then we can start the lecture. Just waiting for the students to join. Students, ensure that you are muted so that there's no disturbance as such. I'm sharing a photo or a screen over here. Just tell me whether it is visible or not.
I'm sorry, class. It took me some time. Just give me a minute. I'll share the photo now itself. So is it visible? Is the photo visible, class? Reply, please. Okay, one of you reacted. What about others? Is it visible to others as well? React in certain way for me to understand. Okay, great. So there are these are sources of industry analysis. What we'll be doing today is winding up of Unit 4 with the last session. Sources of industry analysis as of now are divided into two sources: external sources and sources provided by company. We'll look into each of them in detail. If you have any query in the process, do ask. So when I say industry analysis, we all know that we consider n number of factors while studying or doing industry analysis. Those factors determine the profitability or success of the industry. There are n number of ways which we can do industry analysis, like some of them which we studied. So after doing that, for doing that, or sorry, not after doing that, for doing industry analysis, you need to you require to have certain information. Now what are those information? We'll first go through the company sources of information, and then we will follow the external sources. Now the sources can be classified over here. I have taken company sources and external sources as classification. When I say company sources, in the image, four of them are listed. What four? RHP, that is Red Herring Prospectus, annual report, then investors presentation, and corporate presentation. What do we mean by that? And what are these resources? So when I say RHP, I don't know how many of you have heard of RHP. How many of you have heard of RHP? क्या होता है? Tell me. Tell me what is RHP? Come on, class, tell me. Red Herring Prospectus. Okay, red herring prospectus. The red herring prospectus is known as RHP. In RHP, what are the details and when is an RHP issued? When is an RHP issued? While applying for IPO. Okay, great. The RHP is issued while we are applying for IPO. When a private limited company is going for listing, and in that listing they are going to be transferred into a public limited company. During that process, they are supposed to submit a DRHP. Now, what is a DRHP? DRHP is a draft red herring prospectus. DRHP is a draft red herring prospectus. That DRHP is submitted to whom? To SEBI. And now SEBI will, what will SEBI do? SEBI will look into all the information, and if they feel that the information is up to mark, they will approve the DRHP, and then it is converted into the final prospectus, that is RHP. Now, what kind of information does this RHP holds? Since it is clear that this is a document which is issued during the IPO issue, or when you are first entering into the primary market or secondary market. So the information provided here is everything related to company. For first of the information will be regarding, of course, the IPO, that what is the reason for IPO, for what purpose are they issuing this IPO. Then the structure of the IPO will be clearly stated, but it also includes other things related to company, like the structure of the company, what kind of product it deals with, what are the future plan of the action. वो जो IPO issue कर रहे हैं उनसे उनका future plan of action क्या है वो पता चलेगा. That is the purpose of IPO. Then the previous
द प्रीवियस स्टेटमेंट्स कि वो प्रीवियसली इससे पहले कौन से प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, व्हाट इज देयर current market structure, what is the current market growth, everything what information we need to study, उनका competitive level क्या है, उनकी strategies क्या है, वो सारा इंफॉर्मेशन आपको क्या मिलेगा तो प्रोवाइड कर सकता है। कौन प्रोवाइड कर सकता है? RHP एज ए स्टेटमेंट प्रोवाइड कर सकता है। RHP एज ए स्टेटमेंट कैन प्रोवाइड यू ऑल दिस इंफॉर्मेशन। Is it clear? What kind of information? तो everything related to the structure. उनके cash flows क्या है, उनकी liabilities कितनी है, उनके assets कितने वो hold करते हैं, then the risk which the company will go. They provide you their SWOT analysis. Now, what is a SWOT analysis? Anybody who is aware of SWOT analysis? Strength, weakness, Strength, weakness, opportunity, and threats. and threat. Strength, weakness, opportunities and threat. Very good. I'm happy to hear answers. So ये जो आपका SWOT एनालिसिस होता है, इसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन, अब वो ऐसे नहीं बोलेंगे कि दिस इज द SWOT एनालिसिस, बट दे विल टेल द स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स ऑन विच दे कैन गेन बिजनेस. व्हाई विल दे टेल so? To attract more investors, to increase the confidence of the investors in their business, and for doing so they disclose all their assets in the RHP. A proper disclosure is included, and this will help other users who wish to look into the information of the company. जो दूसरे इन्वेस्टर्स है या फिर ऐसे लोग हैं जो एनालिसिस करते हैं, इन्वेस्टर्स फॉर प्राइवेट इन्वेस्टर्स हो या फिर कोई आपके कंपनी इन्वेस्टर्स हो, विच आर नोन एज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, और इट मे बी एज अ रिटेल इन्वेस्टर्स हम खुद हो, अगर हमको कभी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो हम उसका RHP देख के वी कैन डिसाइड वेदर इट इज वर्थ इट और नॉट. Now comes the second question: how is this RHP accessible? How is this RHP accessible? Anybody has idea? अगर मुझे किसी पर्टिकुलर कंपनी का RHP चेक करना है तो how can I do that? हमको पता तो है what is RHP, and a company issues it while publishing a IPO or while issuing a IPO in the market. But where can you access? क्योंकि वो तो SEBI को सबमिट कर रहा है, तो is it a public document accessible to people? Yes. What? Yes, it is a public document which is accessible to people. Anybody who wishes to go through RHP, it is on SEBI's वेबसाइट. आप सेबी के वेबसाइट को एक्सेस करेंगे, वहां पे आपको डॉक्यूमेंट्स करके एक ड्रॉप डाउन लिस्ट दिखेगा. इन दोज डॉक्यूमेंट्स व्हेन यू गो टू RHP, in that RHP you will find n number of RHPs of the recent issues. जितने भी recent issues सेबी ने अप्रूव किए होंगे, उन सबके RHP आपको वहां पे क्लियरली अवेलेबल होंगे. तो अब ये RHP is not a small document. Understand this. RHP is not a small document जो 5 पेज 6 पेज का होता है. No, it is a long 300-400 pages document which will help you to do proper analysis, of the कंपनी. जितनी भी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करना चाहते हैं रिगार्डिंग देयर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उनके प्रमोटर्स कौन है, उनका लाइबिलिटीज है, आर दे इनटू डेट और एनीथिंग. I'm sorry, I was muted for a minute. So continuing, this will provide you all the details regarding them. What are the future risks? Because this RHP is drafted with the help of proper analysts. Again, they will tell you the set of risk which the company feels that they'll be having. इस तरीके से every proper analysis is included in RHP, and through SEBI's website, any investor can access those information.
The next source of information is what? It is annual report. Now everybody knows by the meaning of the word itself what is the annual report. A report which the company publishes at the end of the year after their AGM, that is annual general meeting. Every institution, irrespective of its working, has to conduct AGMs or 6 years half yearly AGMs भी होते हैं, that is half yearly meetings होते हैं जो आपके, even those reports. AGMs are annual general meetings. Every company is compulsorily, it is mandatory for them to conduct these meetings. These are board meetings where every discussion of the company is done. So in those meetings, it is mandatory to be held for the companies. After those meetings are held, उनके minutes prepare होते हैं. Now minutes को आप किस में convert करते हैं? Report में convert करते हैं. What are minutes? Minutes are nothing but notes of what have been discussed in the meeting. The agenda of the meeting and everything else is recorded in that, and then an annual report of the working of the industry is published. Annual report again will give you in detail information of the industry or the company which you are working or are trying to analyze. उस industry का सारा information आपको मिल जाएगा अगर आप उस कंपनी का एनुअल रिपोर्ट स्टडी कर रहे हैं. इट विल इंक्लूड द बैलेंस शीट, इट विल इंक्लूड द इनकम स्टेटमेंट, इट विल इंक्लूड कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, इट विल आल्सो इंक्लूड the merger management discussion and analysis, MDAs बोलते हैं. What are management discussions for future plans? What are their previous discussions? जो previous discussions हुए थे उसका conclusion क्या आया? Suppose in the previous meeting they had decided on something, on working on a new project. How is that project currently going on? Are they aiming to take over a certain company? What are everything regarding the decision making? Because understand this, whenever we are talking about investing in an industry, their business decisions are what will lead to increase in the profit. उनके जो business decisions है वही उनके profit को increase करेंगे, and their profit is something which will help in increasing their market share. A loss-making company will never increase or show growth in the market. So what we are trying to study is the future course of the actions of the industry and the source of information. Now, an employee working in the industry might know the future course of action, but for others, these annual reports generated by the company will give them a deep down detail of what is going on in the company. कि उस कंपनी के फ्यूचर डिसीजंस प्रोसेस क्या है. इट विल गिव यू हाउ व्हाट द गवर्नेंस ऑफ द कंपनी इज. नाउ सी उनका रेगुलेशंस, जैसे हमने पढ़ा कि लीगल एनवायरनमेंट क्या होता है, सोशल एनवायरनमेंट, इस चीजों को वो फॉलो कर रहे हैं कि नहीं. इवन दोस गाइडलाइंस आर बीइंग फॉलोड और नॉट विल बी लिस्टेड. आर देयर सर्टेन I'll say, are there certain disadvantages which they are facing? तो वो disadvantages को अगर discuss किया तो even that will be included. So all those things are included in what the annual report. What happens is this increases the chances of transparency. जो ट्रांसपेरेंसी होती है अगर वो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज है तो जो जितने भी उसके स्टेक होल्डर्स है, सप्लायर्स हो गए, कस्टमर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गई, दीज ऑल आर स्टेक होल्डर्स ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी. सो इन स्टेक होल्डर्स को क्या मिलता है? ट्रांसपेरेंसी मिलती है फॉर देयर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. अदरवाइज दे विल नेवर कम टू नो कि बैक एंड पे कंपनी कौन से डिसीजंस ले रही है और उनको अपने इन्वेस्टमेंट के साथ क्या करना चाहिए. सो फॉर द होल एंड सोल पर्पस these reports are then made public for them to access the or do the industry analysis. Clear? Clear class? Yes. Okay. The next is presentations. Now what kind of presentations we are talking about? We are talking about corporate presentations and conferences. There are conferences and presentations which are organized. There are conferences and presentations which are organized at corporate level, and then आप उस sources को use कर सकते हो as a information or as a source for making decisions.
I'm sorry, the photo is being stop sharing again and again. I'll reshare it. Is it visible now? Class, is it visible now? Okay. We were talking about corporate presentations. What kind of informations those presentations will provide us? So these corporate presentations again will provide you information regarding future discussions कि उनका sources क्या है, what kind of information, what kind of business are they trying to इन्वॉल्व, उनके जो मिशंस है, जो विजन्स है, वो कौन सी एजेंडा पे काम करने वाले हैं, इन सब चीज़ों को कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन में डिस्कस किया जाता है. बट मेनी टाइम इट इज नॉट नेसेसरी कि दीज प्रेजेंटेशंस विल बी पब्लिकली अवेलेबल. आप सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ डेटा में चेक कर सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे मैगजीन्स होते हैं, न्यूज़पेपर्स होते हैं, जो कंपनी के कॉर्पोरेट एक्शंस को क्या करते हैं, publish karte hai. There are various newspapers which basically deals with providing information regarding to business. सो देर आर इन्वेस्टर्स रिलेशन वेबसाइट जहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि लोग क्या करते हैं ना, तो जो बिजनेसेस होते हैं वो अपने कॉन्फ्रेंस के डिटेल्स उन वेबसाइट और उन न्यूज लेटर्स पे क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं, एंड देन दैट कैन बी यूज्ड एज अ सोर्स टू स्टडी. वो अपने हिस्टोरिकल डेटा को, वट एवर डेटा दे विच कैन बी पब्लिकली एक्सेसिबल, उन डेटास को वो उन न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स और ऑफकोर्स ऑनलाइन साइट्स के थ्रू पब्लिश करवाते हैं. Those presentations are helpful for investors again to analyze and understand the industry they are trying to invest in. उस इंडस्ट्री को समझने के लिए, उसके अंदर कैसे प्रोडक्ट्स डील होने वाले हैं, उन चीजों को समझने के लिए these presentations or news sources of information are very useful. So on a company level, 2-3 important documents are there. Other than that, since it is a public limited company, all of us are aware कि अगर वो private है तो आप annual reports और इस पे depend करोगे. But what if it is a public limited company? If it is a public limited company, so it means that you can easily check the balance sheet, PE ratio, you can go for cash flow statement available on their websites, क्योंकि उनको it is mandatory for them to publish all these past returns, what kind of dividend they are offering, what is their annual return, what kind of profit are they distributing among the investors, who are their competitors. You can compare their in an industry, if there are two strong competitors, knowing the balance sheet of both of them will help you to compare, do comparative analysis for the same, जहाँ पे आप एक दोनों कंपनीज के प्रॉफिट मार्जिन को कंपेयर कर सकते हैं, या दोनों कंपनी के डिसीजन मेकिंग या लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स चेक कर सकते हैं क्या है, दोनों कंपनी का मार्केट कैप शेयर चेक कर सकते हैं. इन चीजों को चेक करके आप इंडस्ट्री एनालिसिस और अच्छे तरीके से कर सकते हैं, because of the only reason that the source of information is available to you. But what if it is a private limited company? If it is a private limited company, not listed, a private company, पहली बात तो in a private company retail investors cannot invest. Private companies go for private placements via their sources, मतलब उनको जिस sources को वो जानते हैं उनके पास जाके ही वो privately fund raise कर सकते हैं. तो अगर वो private fund raise कर रहे हैं, इसका मतलब कि आपको उनके ज्यादा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन पता नहीं होगा. इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर देम टू डिस्क्लोज देयर बैलेंस शीट. दे विल डू दैट टू ओनली पीपल हु दे आर इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम. उनको ऐसा लगता है कि देयर इज दिस, सपोज एन XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसको इन्वेस्टमेंट्स चाहिए, बट दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू गो फॉर मेकिंग देयर कंपनी एज अ पब्लिक लिमिटेड. व्हाट दे विल डू, they will go to a private investor firm. It can be a NBFC firm, it can be a bank loan, it can be a HNI, कोई हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है, उसके पास जाके उसने पैसे डिमांड किए, किसी वेंचर कैपिटल फर्म के पास चले गए, किसी
वो फैक्टरिंग, सॉरी नॉट फैक्टरिंग, किसी फर्म के पास गए जहाँ पे प्राइवेट इक्विटी फर्म्स होती है ना, व्हाट आर प्राइवेट इक्विटी फर्म्स, तो वो ऐसे फर्म्स होते हैं जो पैसे प्रोवाइड करते हैं टू ऑलरेडी ग्रोन बिजनेस, जो मेच्योर्ड बिजनेस होते हैं उनको पैसे प्रोवाइड करते हैं। वेंचर कैपिटल फर्म्स कौन से होते हैं, जो ग्रोइंग, जो न्यू बिजनेसेस होते हैं, स्टार्टअप्स है, उनको पैसे प्रोवाइड करते हैं। सो फॉर देम व्हाट इज रिक्वायर्ड इज, वो अपना जो इंफॉर्मेशन है, कंपनी के रिकॉर्ड्स है, वो सिर्फ उन पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस को ही दिखाएंगे, नॉट मेक इट अवेलेबल टू द पब्लिक। बट इफ इट इज अ प्राइवेट public limited company, all this information is available to you via the sources, by the company itself. Company itself will have to make all this information available to the people. I hope it is clear the difference, how a public limited company's information is easily available, whereas when you are talking about a private company, it is not available. Secondary, if it is a private company, as an investor, you are not even allowed to invest in it until and unless it has its shares in the market. Is it clear, class? Yes, miss. Students? Yes, miss. Understand. Okay, understood. Great. So we can move on to the next part, which is the external sources. Now, when I say external sources, there are many. The first one is very important, that is credit rating agencies and the rating methodology. When we talk about a particular industry, there are certain institutions. We call them as CRAs. Now, what are CRAs? That is nothing but full form of credit rating agencies. Any security which is traded in the market belonging to any industry, वो किसी भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री का हो, किसी भी फॉर्म रिलेटेड हो, अगर वो मार्केट में है, इन द इक्विटी मार्केट और इन द स्टॉक मार्केट और इट इज इन द डेट मार्केट इटसेल्फ, वो डेट में है तो भी चलेगा, क्योंकि इंडस्ट्री एनालिसिस इट इज नॉट दैट कि आप शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो ही है, आप बॉन्ड्स में, डिबेंचर्स में या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। म्यूचुअल फंड में डिसीजन मेकिंग इज नॉट इन योर हैंड एज मच, क्योंकि आप फंड सिलेक्ट करते हो सीधा, बट अगर आप एज अ रिटेल इन्वेस्टर्स यू आर टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टिंग इन शेयर्स और डिबेंचर्स और बॉन्ड्स, सो वहां पे these there are these agencies involved. Now what is the work of these agencies? The work of these agencies is to go through the industry or a particular firm which is trading in the market, और आप क्या करते हैं, ये उनके ना पूरा जितना भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, वट एवर इंफॉर्मेशन इट मे बी रिगार्डिंग देयर कंपनीज, बैलेंस शीट, पोर्टफोलियो, उनकी कंपनी का पोर्टफोलियो कि कितना इन्वेस्टमेंट्स है, कितने असेट्स है, कितने लायबिलिटीज है, all those set of information taking into consideration each and every factor which may affect the market movement, उन सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके ये क्या करती है, तो सिक्योरिटीज को रेट करती है। रेटिंग ऑफ द सिक्योरिटी मींस व्हाट, उनको नंबरिंग्स देती है। नाउ दीज नंबरिंग्स आर डिपेंडेंट ऑन द मूवमेंट। व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट? शेयर मूवमेंट। वो पर्टिकुलर इक्विटी शेयर या स्टॉक या उस पर्टिकुलर बॉन्ड में कितना ज्यादा रिस्क एसोसिएटेड है, रिस्क को मेजर करके वो उसको रेटिंग देती है। नाउ यू माइट हैव हर्ड ऑफ कंपनीज लाइक मूडीज, यू माइट हैव हर्ड, अगर मैं इंडियन लेवल पे बात करूँ तो देयर आर कंपनीज कॉल्ड कैर, CARE, कैर। देयर इज अ कंपनी कॉल्ड इक्रा, ICRA, इक्रा। ये सारे क्या है, इंस्टीट्यूशंस है। मूडीज इंटरनेशनल लेवल, दैट इज USA लेवल पे काम करता है। इक्रा और कैर इंडियन लेवल पे है। दीज आर इंडियन कंपनीज और इंडियन इंस्टीट्यूशंस। These credit rating agencies, whenever a company is going through issuance in the market, these companies will come into picture and will rate the securities. Now if I'm talking about rating bonds, जब आप bonds की बात करते हैं तो जो bonds की rating होती है ना, those comes in letter. ये जो बॉन्ड्स की रेटिंग होती है वो क्या होती है, लेटर्स में आते हैं। कैसे लेटर्स में आते हैं, तो AAA, AA, then A, then you have B, then you have C, then you have D. This is the order of credit rating agencies. Now when I say AAA, the AAA is the security. अगर आप किसी debt security, usually bonds को आप AAA रेट कर रहे हो
इसका मतलब होता है कि वो सबसे सेफेस्ट है। वो क्या है? सेफेस्ट सिक्योरिटी है, ट्रिपल ए। ट्रिपल ए इज द सेफेस्ट सिक्योरिटी। व्हेन आई से उसके नीचे सबसे लो सिक्योरिटीज कौन सी होती है? तो डी। सबसे लोवेस्ट सिक्योरिटी जो होती है वो होती है डी सिक्योरिटी। ट्रिपल ए होता है, फिर ट्रिपल बी होता है, मतलब ट्रिपल ए, डबल ए, देन कम्स ट्रिपल बी, देन डबल बी प्लस। नाउ व्हेन आई से ट्रिपल ए, दो सिक्योरिटीज आर हाईली सेफ। उनका जो डिफॉल्ट रिस्क होता है वो बहुत कम होता है। बट व्हेन आई से डी, सो दैट इज द रिस्क कि इसका जो इश्यूअर है वो शायद अपने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को मीट नहीं कर पाए। व्हेन आई से डबल बी, तो इसका मतलब है इट इज सेंसिटिव, मोर सेंसिटिव व्हेन कंपेयर्ड टू ट्रिपल ए और डबल ए वाले बॉन्ड्स। वहां पे आपके जो रिस्क है वो इंक्रीज होता है। तो जैसे जैसे बॉन्ड की रेटिंग्स कम होते जाती है, आपका रिस्क क्या होता है? इंक्रीज होते जाता है। तो अगर आप चेक करेंगे कि अगर किसी कंपनी ने प्रीवियसली इशू किया हुआ है, तब उसके रेटिंग्स क्या थे, क्या डाउन द लाइन रेटिंग्स इंप्रूव हुए हैं या रेटिंग्स की वैल्यू डिग्रेड हो गई है, इस तरीके से आप इंश्योर या चेक कर सकते हैं या स्टडी कर सकते हैं कि कंपनीज को जो रेटिंग्स दिया है वो अच्छा है या बुरा है। एंड बेस्ड ऑन दैट रेटिंग्स एंड योर ओन एनालिसिस, यू कैन टेक अ डिसीजन वेदर और नॉट टू इन्वेस्ट इन दोस कंपनीज। समझा? When I say equity, so understand that even equities are equity transactions or equity securities are also rated, but equity जो securities रहती है ना, वो बहुत बार numbers में होते हैं instead of letters. Now what are those numbers? Those numbers are from 1 to 5. जो equity के securities होती है. हाँ मंथन, you have raised your hand. What is the query? Manthan, you have raised your hand. Is there a query which you wish to ask? Manthan, is it a mistake, I believe, from his part? He has not checked it yet. Or is it a query? I believe that is a mistake on its part. Is not active currently. Okay, so leaving him, we'll move ahead. We were discussing equity ratings provided by these credit rating agencies. जब मैंने bonds या debt securities की बात की ना, तो major agencies use letters or alphabets for that. But when I talk about equity, in equity they do not use alphabets. Rather than that, they go for numbers 1 to 5. 1 to 5 की रेटिंग्स होती है फॉर इक्विटी सिक्योरिटीज. 1 मीन्स स्ट्रॉन्ग बाय. When the security is rated at 1, it means that the indication is it is a good security, you can buy it now. But when the security is rated as 5, it means it is a strong sell. अब आपको वो security को क्या करना है? Sell करना है. So these credit rating agencies play a major role. Understand that it is compulsory for securities or industries to get them rated. वो एक compulsory process होता है जहाँ पे rating होती है. तो rating mandatory होती है to ensure that industries who are not able to fulfill the requirements or will not be able to pay off returns properly are not entering into the market. जो investors हैं उनको एक safety assurance के जैसा काम करता है. Of course, then again they do not claim to say कि जो वो credit ratings जो बोल रहे हैं that is they claim that is what they are stating. It is not a advice. They are not giving you advice. They are stating facts. Is that what they say? The next is peers and friends. Now, peers and friends is a source which everybody knows how it works. Many a time, Excuse me. investors do not rely on proper sources. Rather, they rely on. Manthan, are you speaking something? Miss, excuse me. Ma'am, who are the regulators of credit rating agency? The regulators of credit rating agencies, basically they are not regulators as such. They are being provided guidelines on how to work. Okay. Ma'am, I understand, Then but there who are are the regulator of them? Means like if stock market is there is regulator of SEBI, and upper हाँ हाँ. head is of RBI, means of government. But who are the regulator of credit rating agencies? If they default while giving ratings to any other company, or maybe by under genuinely or See, by willfully, so who are the regulator of
credit rating agencies. I understood your question. See, I'll tell you something. I don't know how many of you remember the 2008 crisis. These you understand something called as self-regulation? Yes, ma'am. Now, what is self-regulation? These industries are self-regulated by certain guidelines which have been provided. Uh, when I'll tell you about 2008 crisis, what happened during that crisis, I cannot define you all the detail because that will take me 2 hours. But one of the default in that system was the credit rating agencies, because what they did was they gave good ratings to default or to trash सिक्योरिटीज, द सिक्योरिटीज विच वेर नॉट अप टू द मार्क, उनको भी उन्होंने क्या किया ना, तो अच्छे रेटिंग्स दिए हुए थे. नाउ व्हाट हैपेंड इज कि जो उनके क्रेडिट रेटिंग्स को लोगों ने और इन्वेस्टर्स ने ट्रस्ट किया, उसके वजह से इन्वेस्टमेंट काफी इन्वेस्टर्स ने क्या किया, उसमें इन्वेस्ट किया. अब क्योंकि प्राइमरीली मार्केट को कौन कंट्रोल करता है, तो सेबी कंट्रोल करता है, एंड क्रेडिट रेटिंग इंस्टीट्यूशंस बीइंग पार्ट ऑफ इट इज आल्सो समवॉट रेगुलेटेड बाय गाइडलाइंस. बट मोस्टली दे नीड टू बी अ सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी. जैसे अब अगर बैंक्स होते हैं, तो बैंक्स जब काम करते हैं तो डिफॉल्ट में उनको आरबीआई जैसे आपने बोला कि आरबीआई विल लुक इनटू द मैटर. सिमिलरली अगर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज डिफॉल्ट करेंगे तो सेबी विल कम इनटू द पिक्चर. SEBI will come into the picture and they will look into the reasons of the default कि ऐसा क्यों हुआ. Then of course there will be repercussions, legal repercussions which they'll face, because when you are forming a credit rating agencies, there are certain things which you are बोलते ना, by default you have to follow those rules. जैसे एक merchant banker है तो उसके एक set of rules आते हैं कि they have to follow these guidelines, they cannot cheat, they have to be good, they have to be non-biased to their clients. Similarly credit rating एजेंसीज को भी नॉन बायस्ड ओपिनियन देना होता है, बेसिकली ऑन द फैक्ट्स. तो अगर वो डिफॉल्ट करते हैं एंड दैट डिफॉल्ट इज ब्रॉट इनटू द पिक्चर बाय अ सर्टेन फ्रॉड और समथिंग, सेबी विल कम इनटू द पिक्चर. सो यू मे से एज अ पॉइंट सेबी इज द रेगुलेटर, बट ऐसा नहीं है कि वो कोई लीगल ऑब्लिगेशंस लगाता है वहां पे, वो गाइडलाइंस देता है. रूल्स और ऐसे कोई एक्ट वगैरह नहीं है कि ये पर्टिकुलर एक्ट है जो इनको फॉलो करना होता है. Understood? Yes, miss. Thank you. So that is how it works. बोलते ना, some of it is self regulation, but अगर default होता है तो SEBI will come into the picture. Other monetary even RBI can come into the picture अगर suppose वो कुछ ऐसा legal level पे fraud करते हैं where money comes into the picture. तो वहां पे those institutions will come into the picture and take a call and take a decision. बट ऐसे कोई पर्टिकुलर एक्ट नहीं है जो उसको गवर्न करता है. जैसे बैंक्स के लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, अगर हम फॉरेन ट्रांजैक्शंस की बात करें तो फेमा का एक्ट है, अगर हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करें तो उसके लिए अलग एक्ट है. यहाँ पे कोई ऐसा पर्टिकुलर एक्ट नहीं है, बिकॉज व्हेन दीज इंस्टीट्यूशंस आर मेड तभी उनको सारे गाइडलाइंस बहुत क्लियरली बता दिए होते हैं कि व्हाट आर देयर सेकंड कोर्स ऑफ एक्शंस, एंड इफ दे आर नॉट फॉलोइंग दैट कोर्स ऑफ एक्शंस दे विल फेस रेपरकशंस. Clear? Okay. So moving ahead, the next is peers and friends. Now peers and friends is nothing but आपके बहुत सारे जो investors होते हैं, they mainly rely on reviews of givens by their friends instead of doing their own research analysis. वो खुद के analysis करने के जगह पे their major source of information is someone जो already कर रहा है. Many a times in India what happens is people depend on professionals. तो वो खुद करने के जगह पे कोई उनका फ्रेंड है जो प्रोफेशनली उस चीज में काम करता है, उस पे डिपेंड कर सकते हैं फॉर द डिसीजन मेकिंग, विच इज नॉट इवन अ बैड थिंग इफ दे आर नॉट फाइनेंशियली लिटरेसी अगर उनकी नहीं उतनी स्ट्रांग है कि दे फील दैट द एनालिसिस व्हिच दे विल डू इज करेक्ट, दे मे डिपेंड ऑन द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन और फॉर फर्दर और डिटेल्ड एनालिसिस ऑन देयर peers and friends. So this is something which is not supposed to be discussed in detail. Next is आपका industry report. Now when I say industry report, it again means certain reports which are generated by the industry. ओवरऑल इंडस्ट्री के रिपोर्ट्स आप चेक कर सकते हैं, कितने फर्म्स है, मेजर फर्म्स क्या है, उनका मार्केट शेयर क्या है,
उन रिसोर्सेज के लिए कंपैरिजन के लिए हैव टू गो टू ऑल द मेजर फर्म्स. Nowadays there are various websites, there are various platforms in which you can get all this information on a click, on a single search of on the net or the website. You can get all the information which you require for your analysis. फिर वो उनका detailed structure of balance sheet हो, वो उनकी detailed analysis report हो, ये सब कुछ आपको बहुत easily available हो सकती है. Next is analyst report. There are blogs, then there are webinars. जो कंपनीज होती है वो वेबिनार्स रखती है जहाँ पे वो अनाउंसमेंट्स करती है अपने फ्यूचर इवेंट्स का. व्हेन एवर यू अंडरस्टैंड दिस, जो एनुअल अनाउंसमेंट होते हैं, एनुअल रिपोर्ट्स रिलीज होते हैं, उन सब चीज़ों को हम एक्सटर्नल सोर्स भी काउंट कर सकते हैं. देर आर वेरियस मैगजीन्स, देर आर वेरियस वेबसाइट्स विच बेसिकली says only deals with only business news. जो आपके मिंट होता है, एक मिंट है, then there are वेरियस अदर वेबसाइट्स जहाँ पे आपको पर्टिकुलरली और बिजनेस रिलेटेड न्यूज आएंगे. एनी स्मॉल डिसीजन टेकन विच विल इन्फ्लुएंस द इंडस्ट्री, विच बी रिकॉर्डेड एंड विल बी circulated among the individuals to understand or to be taken into consideration while they are doing their industry analysis. इस तरीके से they take into consideration all other sources while doing industry analysis. उसके ग्रोथ को स्टडी करना, उनके प्रॉफिट्स को स्टडी करना, टू अंडरस्टैंड व्हाट आर देयर new reports. Then there are ministry reports, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स होती हैं, peer review journals और case studies होते हैं. I'll share my screen, just wait, then we can continue further with this topic. Tell me, is the screen visible? Class, is the PDF visible? Yes, miss. Sorry, yes or no, what you said? Yes, miss. Screen is visible. Okay, great. If the screen is visible, so we can continue. This is a Word PDF which I'll be sharing with you people later. So what we did now was a classification where the sources of information was divided into external sources and company sources. There is another way which we can classify this, that is primary sources and secondary sources. अभी हमने जितना भी sources discuss किया, that was secondary sources. When I say primary sources, we are talking about actually doing first-hand research by taking or talking with industry experts, interviews लेना, Google survey forms पे conduct करना, field observation से जो आप information collect करते हो. Now this source of information may not be easy for all kind of investors. ये जो आपके media personalities होती है, journalist होते हैं, या people who are actually writing research papers, उनके लिए easy हो सकता है. But those interested in only doing investment, they usually go for which source of information? Secondary sources. In secondary sources, I have again classified into various different sources. The first one is government publications. Now understand that even government has its own publications, magazines जैसे publish मैंने बोला, तो government क्या करती है, खुद के publications create करती है, economic surveys के data देती है, वो industry ministry reports आते हैं जो आप check कर सकते हैं. There are census data, and always understand the reliability of a peer review journal is much less when compared to reliability of government publications. अगर कोई ऐसी रिपोर्ट्स है जो गवर्नमेंट के साइड से आई है, या कोई ऐसी रिपोर्ट है जो इंडस्ट्री या कंपनी ने खुद जनरेट की हुई है, जैसे उनके एनुअल रिपोर्ट्स हो गए, उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गए, तो उन चीजों पे आप ज्यादा रिलायबल रह सकते हैं कंपेयर टू इंफॉर्मेशन विच इज वाया पब्लिक सोर्सेज लाइक न्यूज चैनल्स एंड एवरीथिंग.
So when I say government publications, there are economic surveys which are conducted, जैसे आपका जो सेंसस डेटा होता है उसमें आता है, देन आपके जीडीपी से रिलेटेड जो आपको रिपोर्ट दिखती है उसमें आप इंडस्ट्री वाइज ग्रोथ चेक कर सकते हैं, क्योंकि आप जब जीडीपी रिपोर्ट चेक करते हैं तो उसमें दिखता है कि पर्टिकुलर इंडस्ट्री सेक्टर में कौन सा इंडस्ट्री सेक्टर में ग्रोथ दिख रहा है. By checking that growth you can understand that yes, in this sector I can select a firm because it promises future growth. देन मिनिस्ट्री रिपोर्ट्स जो होती है, इंडस्ट्रीज बहुत सारे मिनिस्ट्री रिपोर्ट्स जो होती है वो जनरेट करती है, पब्लिश करती है, उसमें आपको प्रीवियस पास्ट डेटास भी स्टडी करने को मिल सकता है. When I say the next source is industry reports, now in industry reports, what kind of reports? Trade associations. आपके trade associations वाले जो report होते हैं, और there are various trade associations जो union commerce या chambers होते हैं, chamber of commerce. There are various other organizations which work on which are related or affiliated to those industry. वो इंडस्ट्रीज क्या करते हैं, तो उन रिपोर्ट्स को पब्लिश करते हैं. जैसे ऑटोमोबाइल के मैन्युफैक्चरर्स है, उनके एसोसिएशन ने सेल्स डेटा पब्लिश किया, तो वो सेल्स डेटा से आपको पता चलेगा कि कौन से प्रोडक्ट का सेल्स हो रहा है, कितना हो रहा है, कौन से लेवल पे हो रहा है, क्या फ्यूचर ग्रोथ है स्कोप का या नहीं है. वट एवर डिसीजन यू वांट टू मेक, दैट इंफॉर्मेशन कैन बी अवेलेबल टू द इंडस्ट्री रिपोर्ट्स जनरेटेड और पब्लिश्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशंस. The next is company reports, which we have already discussed. Annual reports है, financial statements है, firm level analysis होते हैं. मतलब एक बार आपने अगर industry select कर ली, उसके बाद अगर आपको firm level पे analysis करना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इन company reports का use कर सकते हैं. There is a difference between industry level analysis and then firm level analysis. In industry level analysis, you are trying to decide the sector in which you wish to invest. जैसे मैंने बोला मेरे को आईटी में बैंक्स, चलो आई से आई वांट टू इन्वेस्ट इन बैंकिंग इंडस्ट्री, बट इन बैंकिंग इंडस्ट्री व्हिच बैंक आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट इन. सपोज इफ आई हैव डिसाइडेड दैट आई वांट टू इन्वेस्ट इन पीएसयूज, दैट इज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, मुझे गवर्नमेंट की अफिलिएटेड कंपनी में ही इन्वेस्ट करना है, बट उसमें भी तो देयर आर एन नंबर ऑफ कंपनीज, तो कौन सी कंपनी में सिलेक्ट करना है. तो वंस आई हैव डिसाइडेड द इंडस्ट्री, comes the next step where I have to decide the firm in which I want to invest. And in deciding that, then again comes when number of criteria which we take into consideration. फिर आता है आपका academic journals and research papers. There are research papers and academic journals which are written, जो आपके primary sources collect होते हैं वो यहीं पे publish होते हैं. तो आप खुद अगर primary sources से collect नहीं कर रहे, तो वो जहाँ पे publish हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, secondary sources of information, and you can use that secondary sources of information for all the information you need, for forecasting, for competitive analysis, for case studies if you need, to understand the consumer behavior studies. तो आप market research agencies को जो data publish किया है उसको study कर सकते हैं. Of course there are digital and online sources, ये सब business news platforms होते हैं, वहाँ पे आप check कर सकते हैं. Online databases provide होते हैं, उन databases को आप check कर सकते हैं to access the information which you require for future analysis. So these are various sources through which you can use or study industry analysis or have the information which you require to do industry analysis. We'll take 5 minutes break and then we will continue with the session in the further time. Okay. This is 7:55. In 5 minutes at 8 we will continue, and then half an hour more session will be conducted. After that we will wind up. Just a small part is left. We will conclude that in half an hour and then we can wind up.
I have shared a new slide or a new page. Just tell me whether it is visible or not. Class? Yes, this screen is visible. Yes, ma'am, visible. Okay, great. So we'll start with this topic and we'll discuss this. Now, this is industry life cycle model or industry life cycle analysis, as we say. There is a chart over here uh, on which the x-axis is known as time and the y-axis is being stated as demand. And there are 5 stages which has been shown whenever we are studying or doing industry analysis. This is what we can use as a base to understand that it is very important part. जब आप particular industry का growth check करते हैं, so it goes through these 4 stages. Now what are those 4 stages? It is expansion, peak, contraction and throw. That is TROUGH, throw. यहाँ पे जो आपके स्टेजेस होते हैं वो डिपेंड और डिसाइड करते हैं उसका कॉस्ट या प्रॉफिट या रेवेन्यू किस तरीके से होगा. ओवर हियर 5 stages have been listed instead of 4. Now what are those 5 stages? Embryonic, growth, shakeout, mature and decline. Whenever you are studying a particular industry, आप क्या करोगे? तो जब मैंने बात की किसी कंपनी को एम्ब्रियोनिक स्टेज पे होनी थी, व्हेन आई से एम्ब्रियोनिक स्टेज, when I say embryonic stage, it means that it is at the developing stage. The company is at the developing or the industry is at the developing stage and it is showing slow growth. जो आपका growth है वो slow होगा, जो prices है वो high charge होंगे. क्यों prices high होंगे at the starting? Because they do not have the benefit of economies of scale. उनका जो production है वो अभी start हुआ है. The production is not very large. तो उनका जो the cost which they incur for making one single unit is high. So that's the reason to cover that cost they might be charging high prices. There will be a significant or high investment involved. Since the investment involved is high, the risk associated with it will always be high because the business is still at the embryonic stage, which means that the success of the industry is not very sure of. तो अगर सक्सेस श्योर नहीं है, प्रॉफिट श्योर नहीं है, तो रिस्क एसोसिएटेड क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा. व्हेन आई एम टॉकिंग, व्हेन द कंपनी और द इंडस्ट्री इज एट एम्ब्रियोनिक स्टेज. When I talk about growth stage, it means that the people or the customers have accepted the industry in the market. They have started accepting that as a growing market and are readily purchasing the product, which in turn is increasing the profit of the business. Profit of the business is increasing, profit of the business and the industry is increasing. It means that they can offer lower prices to the customers. This will increase the demand. The demand will increase for them. The revenue will increase, the demand will increase, and thus they can decrease the price. They are at the growth stage. People, those who are investing in industry at this stage, यहाँ पे risk high है, but the growth which they will experience will also be high. Now when I say shakeout as a stage, it means that over here the competition, since they have entered a market in a full form zone, so in a full forced way they have entered the market and now they are excelling in the growth. They are here to compete with the big sharks already present in the industry. So the competition increases. Now is the time where they'll have to offer customers or the industry something unique to withstand the competition. उस competition को withstand करने के लिए, survive करने के लिए, they'll have to increase their cost. They will have to offer something good so that they are able to create a goodwill, a brand loyalty and thus maintain the increase in the profit. जो profit increase growth के time पे हुआ था उसको maintain करने के लिए this is the point where the company will have or take decisions, important decisions, growth related decisions. Mature. Now mature stage is the stage where the company is already at its maturity. The industry there are high barriers for entry. There is nobody who will be
at a level, मतलब जो दूसरे competitors है, nobody is at par with the industry, or they have created a good dominance in the market. Because they have created good dominance in the market, the market cap or the investment which they are offering, the returns which they are offering will be high. The last stage is the decline stage. Now this decline stage usually is not compulsory that all company will face. What companies do that after they have reached the mature stage, to jump back into the market, they will either introduce a new component, they'll either introduce a new series to cater the market attention back to their firm or their industry, to to tackle the to give or to gain back the new. Product differentiation is the key. New marketing techniques can be used. Offering customers a new range of products can be used as a way to go back into so अगर ये एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट मेच्योरिटी पे पहुंच गया है, तो दूसरे प्रोडक्ट के थ्रू वो अपने मार्केट को क्या कर सकते हैं, रिवाइव कर सकते हैं. Now, while doing this industry analysis, you study everything in detail. Now, as an investor, what is important? Where is the point where you will invest? And how will this help you to make an investment decision? So, understand this. When you are talking about as an investor, if you are a investor who has a high risk appetite and is wishing to have a high return, they can always invest in industries at their growth or embryonic stage, because that is the stage where they'll have high returns in the market. That is the point where जो उनका इन्वेस्टमेंट है वो डबल ट्रिपल रेट से क्या हो सकता है, ग्रो कर सकता है. एंड इट कैन इवन बी द अपोजिट. वो केस में अपोजिट भी हो सकता है कि उनके उतना ग्रोथ नहीं ऑफर हो रहा है, बल्कि दे आर सफरिंग लॉस. On the contrast, what is they are suffering? They are suffering loss. So that can be possible. But an investor with a high risk appetite should identify industries at their growth stage rather than at their maturity stage. But investors who have a low risk appetite, they will pick industries who are already at their maturity stage. They'll pick up products of industries. वो ऐसी companies को choose करेंगे जो कि blue chip companies होती है उस industry की. देखो, now understand what are blue chip companies. Those are top companies which have already created a name. उनका market share high होता है, उनका market cap high होता है, और उस basis पे वो क्या करते हैं, तो risk कम offer करते हैं. The growth will be stable, there will not be much volatility. Of investors will take this decision on their personal research reasons for what they are investing, what is their aim of investing, what is their risk appetite. उन अपने पर्सनल एजेंडास को स्टडी करके वो अपना डिसीजन लेंगे. बट फॉर देम टू टेक दैट डिसीजन, दे नीड टू अंडरस्टैंड कि कौन से लेवल पे इंडस्ट्री कितना रिस्क ऑफर करेगी और कितना रिटर्न ऑफर करेगी, और उनका प्रपोर्शन क्या होगा. एंड इज द इन्वेस्टर रेडी टू टेक दैट प्रपोर्शन ऑफ रिस्क फॉर मेकिंग डिसीजंस. अगर कोई स्मॉल कैप कंपनीज है जो अभी स्टार्ट हुई है, उनका बिजनेस इतना ग्रो नहीं कर रहा है, दोस कंपनी विल ऑफर यू हाई रिटर्न्स, बट देन द रिस्क एसोसिएटेड विद देम विल आल्सो बी हाई, बिकॉज वो अपने एम्ब्रियोनिक या ग्रोथ स्टेज पे है. इज इट क्लियर? So this is also one way where you can do industry analysis using this life cycle chart. You will understand or collect the information, then you will use this chart to analyze at which stage the company is, and then make a future decision regarding your investment. Clear? Class, is it clear? Friends who are waiting in the room lobby, let me see. What is the use of entering the lecture now? I don't know, but whatever. Ma'am, sorry, what did you say?
No, somebody was in the lobby right now, so I said, what is the use of entering the lecture now? It doesn't make any sense when 80% of the lecture is already covered. That was not for you people. Okay. Okay, so now what I will do is we will look into various platforms or various publications which provide equity information. I was just going through that only. So when I say हमने जब बोला कि government information provide करती है, so which institutions was I talking about? I'll name some of them. So the India Brand Equity Foundation. India Brand Equity Foundation is a website which provides information for various industry analysis, research reports and insight sections and magazines like India Now. That will, if you go on that website of IBEF, you will find information regarding various sectors उनका growth reports होते हैं, fact books होते हैं, fact books in the sense various facts are written in that regarding those particular industry sectors. Then there is Center for Monitoring Indian Economy. Again, this is a service which is provided. Center, again I'll repeat the name, Center for Monitoring Indian Economy. वो आपको क्या प्रोवाइड करता है? तो इकोनॉमिक डेटा प्रोवाइड करता है, डेटाबेस देता है ऑन देयर वेबसाइट्स लाइक इंडस्ट्री यू लुक वेबसाइट. उन वेबसाइट्स पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि व्हाट इज द करंट इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ पर्टिकुलर इंडस्ट्री. Then there is Niti Aayog, NITI, Niti Aayog, which is a government website जहाँ पे आपको strategies, sector specific strategies देखने को मिल सकती है, where you can see this sector specific reports. Then there are again जैसे official websites of ministry where the information is published. There is this Press Information Bureau, PIB, Press Information Bureau, which releases a data that is ASI, Annual Survey of Industries. वो सारे इंडस्ट्रीज का एक एनुअल सर्वे रिलीज करता है. उस रिलीज को पढ़ के यू कैन गो थ्रू द इंफॉर्मेशन विच यू रिक्वायर्ड. These industries or these publications will give you, since these are government institutions and official websites, यहाँ पे जो source of information होगा that is highly reliable. When I say industry associations and research firms, your CII, that is Confederation of Indian Industry, they provide various risk analysis reports on sector like chemical energies, chemical industries and energy industries. वहाँ का जो risk analysis है वो ये CII आपको करके देता है. There is NIAF, that is National Investment and Infrastructure Fund. Again,
NIIF, National Investment and Infrastructure Fund. NIIF offers you insight on various infrastructural projects and industries. कौन से projects है, कौन से industries को वो project मिल रहा है, कितने level पे उनका growth, उनका जो strategy है, development strategy है वो क्या है, उसके reports आपको कहाँ से मिल सकते हैं. तो NIIF पे जाके आप वो reports को check कर सकते हैं. Then there are CRISIL and ICRA, those are your credit rating agencies. वो आपको क्या देते हैं, तो in depth sectoral performance review, वो हर सेक्टर का इन डेप्थ परफॉर्मेंस रिव्यू जनरेट करते हैं ऑन देयर वेबसाइट्स. आप उनके वेबसाइट्स पे जाके स्टडी कर सकते हैं उन सेक्टर स्पेसिफिक रिपोर्ट्स को. देयर इज आल्सो दिस Statistica India. There are various platforms like Bloomberg. ब्लूमबर्ग प्लेटफॉर्म पे आप जाएंगे तो वहां पे आएगा मार्केट लाइन वाया IIMB लाइब्रेरी. ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और डेटा प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे आपको मार्केट शेयर डेटा इंफॉर्मेशन, उनकी फाइनेंशियल न्यूज को आप कंटिन्यूसली ट्रैक कर सकते हैं फॉर बेटर डिसीजन मेकिंग. I just wanted to name these websites because अभी तक मैंने बोला there are sources, but अगर you know the names, so you can use that for your future reference. So that's the reason I just wanted you people to know about the names, which can be part of your secondary source to collect information. You can get all this information by going on the websites of those official organizations. Now with this we can say that we are done with company analysis. You started unit 3 with fundamental analysis जिसमें आपने economic analysis सबसे पहले सीखा. Then अभी जो हमने किया वो था आपका industry analysis. After completion of industry analysis what you will be doing is firm analysis. Firm analysis में आप जब आपने sector decide किया उसके बाद in further detail how to do analysis is covered in the last unit of your syllabus, which is unit 5. Which won't be taken by me. Soon you'll be getting given timetable or whatever information you need regarding that, so that you can join and complete the unit. I'll share my PDF or the word note for the unit 4, and also understand that these meetings, all of them are recorded, so the YouTube link of these videos will be sent in your group. You may access that if need be. All your friends who have not attended the meeting may go through it before the exams, so that you are clearing that exams without any problem as such. Is anybody having any doubt in all the topics which we discussed, not just of today? इससे पहले भी हमने जो भी डिस्कस किया उसमें आपको कुछ डाउट है तो पूछिए. Nobody is having any doubt? Okay, so we'll consider that I'm winding up my lecture today then. You have a good day ahead, whatever the day is left of. Goodbye. You people are allowed to leave the meeting. Thank you so much, Miss. Okay. Students, you are allowed to leave the meeting. Is anybody having any doubt as such or what? Okay, I'm ending meeting for all of them. Bye.